Student, welcome to Physics class 11th, chapter Motion in a Straight Line. Next topic is Equations of Motion under Gravity. When we apply these three equation of motion under gravity, first equation will be V is equal to U plus gt, second is H is equal to ut plus half gt square, and third will be V square is equal to U square plus 2gh. Next topic is equations of motion along a smooth inclined plane. Let us consider an object O sliding down a smooth inclined plane AB. The acceleration of O is less than g. If the object falls freely downward, in fact the acceleration of the object O sliding down the plane is g sin theta. Hence the equation for a body sliding down a smooth inclined plane are V is equal to U plus g sin theta into t, S is equal to ut plus half g sin theta t square. Third will be V square is equal to U square plus 2 g sin theta s. Further, if the body is moving up along an inclined plane, then its acceleration will be minus g sin theta, and the equation of the kinematics will be V is equal to U minus g sin theta into t, S is equal to ut minus half g sin theta into t square, and third is V square is equal to U square minus 2 sin theta into s. So next topic is a distance traveled by an object in a particular second. Let the initial velocity of an object be u, which is moving with a uniform acceleration a. We are to find out the distance traveled by the object in the tth second. We know that the distance traveled by an object in t second is st is equal to ut plus half at square. The distance traveled by the object in t minus 1 second is st minus 1 equal to u t minus 1 plus half a t minus 1 square. The distance s traveled by the object in the tth second will be obtained by subtracting equation second from equation first. Thus s is equal to st minus st minus 1. By solving this, we get s is equal to u plus half a to t minus 1. When we apply equation of motion under the gravity, earth attracts every object toward its center as a result of this attraction. यानी जब भी हम गुरुत्वीय त्वरण के अधीन गति के बारे में अध्ययन करते हैं तो हम ये जानते हैं कि अर्थ सभी ऑल बॉडीज़ को क्या करती है, सेंटर की ओर अट्रैक्ट करती है, और इसमें जब अपवर्ड जाते हैं तो अपवर्ड में हम जी की वैल्यू नेगेटिव और डाउनवर्ड में जी की वैल्यू पॉजिटिव लेते हैं, और इसी से हम ये तीनों इक्वेशन जो हमारे पहले मिले हुए हैं v इज इक्वल टू यू प्लस जी टी, एच इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ जी टी स्क्वायर और वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2gh। लेकिन जब हम किसी इंक्लाइंड प्लेन या तिरछे समतल पर जाते हैं तो उस समय हम क्या करते हैं कि उस समय जी की जगह जी साइन थीटा लेते हैं जब नीचे आ रहे होते हैं, और जब ऊपर जा रहे होते हैं तो माइनस जी साइन थीटा लेते हैं। और 11 तो आपको नेक्स्ट तो आपको मालूम है